Bismillahirrahmanirrahim. This is Kamaruddin speaking from ICA UK. This is the time of the year when a lot of people are asking, is Eid al-Adha connected with Hajj? Is it connected with local moon sighting? Is it connected with global moon sighting? Is it connected with regional moon sighting? And we have been asking some senior scholars to respond to this question, which you may have come across online. However, I would like to present to you an event that was broadcasted by Noor TV Ruyat-e Hilal board on Thursday, 15th July 2021 at 5 to 7 p.m. on their Sky channel, Sky 739, as well as Facebook Live. The event was supervised by Peer Noor Al-Arafin Siddiqui Sahib and chaired by Allama Saeed Zafrullah Sahib. There were certain questions, and in this next clip, their astronomy expert, Brother Zahid Nawaz, is explaining the difference between local sighting and regional sighting, and the difficulties that may arise if we import sighting news from far distant countries such as North America or South America. So please stand by and listen to what our brother Zaid Nawaz has to say very carefully. And if you have any question or comment, write it below on the YouTube channel. Jazakallah. जी गुजारिश ये है कि बिला शाह साहब कि अब हमारी गुफ्तगू आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी। एक बात करना ज़रूरी है, वो है कि महीनों की गिनती। हम साइटिंग करते हैं 29 तारीख को। एक सवाल उठता है कि बरतानिया में हिलाल नज़र आता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट फ़ी नफ्से ही दुरुस्त नहीं है, गलत है। मतलब सवाल ये किसकी 29? आपका जो प्रिंसिपल है मून साइटिंग का क्राइटेरिया, वो आपकी 29 को डिटरमिन करेगा। मसलन अगर मैं मैक्सिको से चांद को इंपोर्ट करता हूँ तो फिर मैं उस बेल्ट की 29 में दाखिल हो गया हूँ। मैं अब उसी 29 तारीख के तयन में अगर मुहर्रम में फॉलो किया है तो सफ़र में उसी 29 में दाखिल होऊंगा और 29 देखूंगा। जबकि आपके गिरदो नवा और मुकामी लोकल साइटिंग से मुराद दाएं बाएं से इस्तिफादा खबर नहीं, स्ट्रिक्टली लोकल साइटिंग, वो तो 28 होगी। अब आप 29 पे चलेंगे उस बेल्ट पे। ये खतरा है किबला अल्लामा मुफ्ती साहब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्क फैक्टर, रिस्क असेसमेंट, कि अगर एक महीने के लिए जुल्हिज्जा के लिए हम चले जाएं पनामा में, हम चले जाएं शिकागो में, हम चले जाएं मैक्सिको में, अब जो अगला महीना मुहर्रम का आएगा जो मौसमी ऐलान है, जैसा कि हमने अपने ऐलान में भी किबला पीर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, एड हॉक फैसला, एड हॉक और पंजाबी जी कहते हैं डंग टपाओ। हाँ, डंग टपाओ स्कीम। अब उस स्कीम पे अमली जो रोयत हिलाल कमेटीज हैं वो मुहर्रम से लेकर जुल्हिज्जा तक ऐलान करेंगी। अब जुल्हिज्जा में आपने इंपोर्ट किया मैक्सिको से चांद, अब आपकी 29 उनके मुताबिक होगी। अब मुहर्रम में क्या करेंगे? अब मुहर्रम में उन्होंने ऐलान करना नहीं है जिन्होंने मैक्सिको से या यूएसए से चांद लाए हैं। अब दोबारा फिर वो रीअमर्ज होंगे रमज़ान में। लेकिन प्रॉब्लम होती है जो रोयत हिलाल बोर्ड के बानी हैं, जिन्होंने एक सिस्टम चलाना है, मुहर्रम से लेकर जुल्हिज्जा तक ऐलान करना है, एक महीने की दूसरे महीने के साथ रब्त है या नहीं, तसलसल है तारीखों का नहीं। अगर आप तौहीद अहिल्ला जो मफरूज़ा है उस पर भी जाएंगे तो आपकी 29 और होगी, लोकल साइटिंग करेंगे तो आपकी 29 और होगी। हमसे अगर कोई पूछे कि वोकैबुलरी की दुनिया में, इस्तिलाह की दुनिया में हमारा जो असूल है जिस पर आप उलमाए किराम अमल करने का हमें हुक्म देते हैं और तहकीक करने का, अंग्रेजी में कौन सा वो अल्फाज है जो इसको कैप्चर करे, तो हम कहेंगे ये रीजनल मून साइटिंग है। कि हमारे वहदत मतला में एक और चीज़ शामिल होना ज़रूरी है, वो है वहदत ग़ुरूब आफ्ताब।
वहदत शम्स वो भी होना ज़रूरी है। उनका ग़ुरूब आफ्ताब अगर 6 घंटे पहले होता है तो वहदत मतला पे तो ज़ोर दिया जा रहा है। जिस चीज़ से आपके कमरी महीने के अंदर दिन का आगाज़ हो रहा है वो तो सूरज है। ये अंग्रेज़ी AM और PM तो कोई माना नहीं रखता। आपका दिन शुरू होता है ग़ुरूब आफ्ताब के बाद। उस फैक्टर को मद्देनज़र रखना जो है वो नागुज़ीर है। इस हिसाब से अगर आप स्ट्रिक्टली लोकल साइटिंग करें, दाएं बाएं देखना भूल जाए, मसलन मराकश है, इंग्लिश में कहते हैं मैगरेब। मैगरेब क्या है? ट्यूनिस है, अलजायर है, मराकश है। मराकश लोकल साइटिंग करता है, अलजायर को नहीं देखता, ट्यूनिस को नहीं देखता, अपनी लोकल साइटिंग करता है। अगर हम भी एक एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में ऑप्शन के तौर फ़कत लोकल साइटिंग करें तो 29 आपकी मुकामी बनेगी। लेकिन हमारे जो उलमाए कराम आप हैं, आप इस्तफ़ादा ख़बर का वो मेथडोलॉजी जो है उस पर अमल करते हैं और वो है रीजनल मून साइटिंग। किताब कोई लिखे, पम्फलेट कोई लिखे, थीसिस कोई लिखे, हमारी क्लासिफिकेशन जब आएगी तो वो रीजनल मून साइटिंग में आएगी। उसके हम पाबंद हैं, उसके हम दलाइल देने के लिए हर वक्त। बहुत शुक्रिया। I hope you have listened to that clip carefully and agree that the criteria being followed is regional moon sighting by the Noor TV Ruyat Hilal Board. That means UK to Morocco, and not global sighting such as importing it from North America or South America. That will make it hardship, that will give rise to hardship, because by the time people in distant countries 8-10 hours later sight the moon, it is our next day. And in Islamic principles, the ruling for moon sighting for Ramadan is same for all other months. This is very clearly stated in the books of fiqh. The other point that I would like to highlight is that in the old days, in the UK, moon sighting was not possible due to persistent cloudy weather. But over last 5-10 years, we have seen that it is possible, and therefore we are trialing a local moon sighting project, and we would like the ulama from all different maslak to participate, to review if it is possible to adopt local moon sighting in future, perhaps from next year, inshallah ta'ala. Jazakallah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.